Students, I am Monica Soral from MA International School, Nayagaon. Today we will be learning the 5th chapter of your Civics, the Judiciary Part 2. Yes, Public Interest Litigation. Now PIL. Now what is this Public Interest Litigation? Has been developed to protect the interests of the general public. Usually the procedures in the Supreme Court come from the judgments or orders made by the subordinate courts, including the high courts. However, recently the Supreme Court has started working on matters of public interest. Any individual or group can file a PIL on behalf of a group of persons whose rights are affected. They can either file a writ petition or एड्रेस लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस को या फिर रिटन पेटिशन वो देके वो लोग फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें जस्टिस नहीं मिल रही. तो हाई कोर्ट वगैरह में अगर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ भेज सकते हैं और वहाँ से दे कैन फाइट द केसेस जहाँ पर अपन को जस्टिस नहीं मिलती. फॉर एग्जाम्पल द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL filed a PIL in Supreme Court against the government for the food shortage in the year 2001. The petition demanded for mainly 4 things. देखो ये वाली जो petition फाइल करी थी ना 2001 में, ये फूड शॉर्टेज के ऊपर petition थी. तो उसके लिए क्या दिया था? To provide employment in drought affected areas, to provide free relief to persons unable to work, to raise food entitlements under the public distribution scheme, to provide subsidized food grains to the affected families and free food grains from the central government through the existing schemes. देखो ये सारी डिमांड उन्होंने वहाँ पेटिशन में की थी कि जो भी इफेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्लड होता है या ड्राउट हो जाता है तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो. जैसे कि पर्सन जो वो लोग जॉबलेस जो हो जाते हैं उनको जॉब दो, जिनके पास खाना नहीं है उनको एटलीस्ट फूड प्रोवाइड करो, है ना. किसी भी तरह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैसे भी करके आप फूड उनको प्रोवाइड करो, उनको शेल्टर प्रोवाइड करो, उनको क्लोथ्स प्रोवाइड करो. तो ये सारी चीज़ें अपन पेटिशन में लिख सकते हैं. अब फैमिलीज जो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनको आप ये प्रॉब्लम से सॉल्व करवाना होता है. तो ये दे डिमांड फॉर दिस. द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स 2 commissions to ensure that its order were followed. The Food Corporation of India FCI was ordered to ensure the food grains are not wasted. अब यहाँ पर देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि जो ऐसे इफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर प्रोवाइड करो सो दैट द पीपल हु आर हंग्री दे विल गेट एटलीस्ट फूड टू ईट. सो डोंट डू दैट. सो दिस इज द थिंग द सुप्रीम कोर्ट कैन डू. And given the responsibility of implementing various schemes of and ensure the demands of PIL were met. Now provisions of legal aid. Many people cannot arrange legal aid for themselves and are assisted by Supreme Court. The Supreme Court Legal Aid Committee provides free legal aid to the following people. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना, जैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किसी लॉयर को या अगर, तो सुप्रीम कोर्ट उनको हेल्प देता है. अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन ₹18,000. A person who belongs to any scheduled caste and scheduled tribe, victims of any natural calamities, women, children, mentally ill or otherwise disabled person, a person who is in a custody. इन सबको ये सुप्रीम कोर्ट का जो लीगल एड कमेटी है ना वो इन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है. इन ऐसे लोगों को जो आई टोल्ड यू हु आर फ्रॉम लोअर कास्ट एंड द पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? दे आर विक्टिम्स ना, ड्राउट हो गया, फ्लड आ गया, उनके पास थोड़ी पैसे होंगे जो वो इस चीज़ के लिए फाइट कर सकें. एंड देन विमेन, चिल्ड्रेन, वीकर सेक्शन, द पीपल हु आर नॉट हु कांट फाइट, हु कांट से एनीथिंग. हाई कोर्ट. Each state of India has a high court which is the highest court of that state. A high court can hear cases against the decision of lower court or on appeal. It deals with the cases of the state under its jurisdiction. Calcutta High Court is the oldest high court of India which was established on the 1st July 1862. There are 24 high courts in the country. Among the union territories, Delhi alone has a high court of its own. The other 6 union territories come under the jurisdiction of different state high courts. अब सब states high court अलग अलग है. दिल्ली में अपना own अलग high court है, सुप्रीम कोर्ट भी है, अलग high court भी है. Because the lower courts which send the appeal, this first send to the high court. High court के पास पहले अपील जाएगी and उनसे अगर solve नहीं होगा then it goes to Supreme Court. तो high court is it should be there in every state. Now
कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ये उनको हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए. देन while appointing the other judges of the high court, the president consults the chief justice of the supreme court, the governor of the state and the chief justice of the concerned high court. अब इन सबको पहले कंसर्न करने का, पहले उन लोगों को पूछना पड़ेगा, इन लोगों के सजेशंस लेने पड़ेंगे. किन किन के? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनका अपन को सजेशन लेना है. फिर प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और फिर कंसर्न हाई कोर्ट का जज वो अपॉइंट करेगा. बिकॉज ही डजंट नो ना व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन ही इज एंड व्हाट टाइप हाउ ही हैज टू अपॉइंट दैट पर्सन. सो दिस थिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो आपने ये पढ़ा कि हाई कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट करता है. वी हैड रेड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो, हाउ दे हैव बीन अपॉइंटेड. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन and you have to read the chapter, the points very carefully. These are the very important things which you are reading. The petition demand, see कब petition demand होना चाहिए and what all you have to do. Now we will see what the next we have to do is in this chapter. Next thing we will learn about, yes, now we will learn about the eligibility of the judge of the high court. To become a judge of a high court, one must fulfill the following condition. He she should be a citizen of India. He she must have held a judicial office in the India for at least 10 years, or he she must have been an advocate of high court for at least 10 years. देखो एडवोकेट होना ज़रूरी है, 10 years उनको वहाँ पर कोर्ट में जॉब करना है एज ए एडवोकेट. एंड 10 years सी हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, कोई भी जुडिशियल ऑफिस को हेल्ड करना है 10 years के लिए, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल फॉर हाई कोर्ट जज. टेन्योर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का हमने लर्न करा था, वो था 65 years एंड फॉर हाई कोर्ट इट इज़ 62 years. ही मे ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और एट एनी टाइम. प्रेसिडेंट में ऑल्सो, इधर भी वही चीज़ होती है कि यहाँ पर वो रिज़ाइन कर सकते हैं अगर उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई हो तो. अदरवाइज अगर कोई इफ़ ही इज़ अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन, मतलब उनका मिसबिहेवियर है या फिर वो इम्पार्शियल हैं, तो भी आप प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं बीच में से ही. तो वैसे तो एज 62 तक है, बट प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जज. नाउ fact file C, advocate general. There is an advocate general for each state appointed by the governor. He holds office during the tenure of the governor. His duty is to give advice to the state governments upon legal matters and to perform other duties of legal character assigned to him by the governor. ये जो एडवोकेट जनरल है उनको एडवाइस देने का राइट है स्टेट गवर्नमेंट्स में, लीगल मैटर्स पे वो लोग इसको हैंडल करते हैं. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द 3 main types of powers or jurisdiction. They are original, appellate and administrative jurisdiction. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? It empowers the High Court to issue direction or orders including writs to any person, authority or government within its jurisdiction on violation of the fundamental rights of the citizen. अगर कोई भी fundamental right को आपने violate किया है तो they have the full right to file a complaint against you. Appellate jurisdiction, it gives the power to the High Court to hear the appeal about civil and criminal cases against the decisions of the lower court. यहाँ पर भी इनको ये पावर होती है कि अगर कोई सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हो और उन लोअर कोर्ट्स में डिसीजन नहीं हो रहा तो वहाँ पर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जजमेंट नहीं दे पा रहे, तो यू हैव टू गिव द हाई कोर्ट विल गिव द जजमेंट. देन द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट. इट कैन इवन इशू general rules to regulate their proceedings. Then comes the other jurisdiction. High Court can start at contempting proceedings against anyone who is found in contempt of the court. अगर किसी ने कोर्ट का rules violate करे, then also he gets the punishment. Every High Court can admit public interest legitimate like that of the Supreme Court of India. Subordinate district courts. There are several courts at the lower level. These are usually at the district or tehsil level or in towns. They hear many kinds of civil and criminal cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge who is appointed by the state government. In addition to the district judge, there may be the number of additional district judges or assistant district judges depending on the workload. District courts are under administrative and judicial control of High Court of the state to which the district belongs. यहाँ पर High
कोर्ट के अंडर में ये डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं. देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी से ही जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जजेस है वो अपॉइंट होते हैं. द हाईएस्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एंड सेशन जज. इट हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी पनिशमेंट इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट. इट डील्स विद केसेस ऑफ अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. देयर आर मेनी अदर कोर्ट्स लोअर देन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस. जैसे कि फॉर सिविल केसेस द कोर्ट ऑफ द सिविल जजेस, सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन ये होते हैं. द क्रिमिनल केसेस द कोर्ट ऑफ द चीफ जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये वाले जो होते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में ये वाली चीज़ होती है जो इनको स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो इनका वर्क होता है. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट District courts perform various important functions. They deal with cases arising within the district. जिसमें जो भी cases होते हैं वो इन डील करेंगे. They hear the civil disputes pertaining to land and properties and pass judgments on them. जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, उस पर उनको जजमेंट पास करना होता है. दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन मेंटेनिंग पीस इन द डिस्ट्रिक्ट. कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये सॉल्व करते हैं. दे कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स. द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज दैट दे टेंड टू क्रिएट अ लार्ज बैकलॉग ऑफ केसेस विच केसेस अननेसेसरी डिले इन सेटलिंग केसेस. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि उनके जो केसेस हैं ना वो बहुत टाइम तक पेंडिंग चलते हैं, उसको वो सॉल्व ही नहीं करते. मतलब अब बार बार लोग आते हैं और उनके केसेस को फाइट करने के लिए, बट दे आर नॉट सॉल्विंग इट ऑन अ प्रॉपर टाइम. लोक अदालत, एवरी इंडियन सिटीजन हैड एन ईजी एक्सेस टू द कोर्ट्स. इफ दे फील दैट देयर राइट्स आर वायलेटेड दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस. हाउएवर इट इज डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू गेट जस्टिस. अब जो पुअर पीपल है दे आर वेरी स्कैर्ड टू गो टू द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. सो फॉर देम दिस लोक अदालत इज फॉर्म. सी नाउ for poor person who is not literate enough to understand the legal formalities of the case, whose family depends on the daily wages, the idea of court to going to court justice मिलने के लिए तो वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. So these लोक अदालत्स are formed for them. In order to reach the deprived, the Parliament enacted the Legal Services Authorities Act 1987. It provides for settlement of disputes through लोक अदालत्स. These are voluntary agencies that are monitored by the state legal aid and advice boards. The main objective of लोक अदालत is, अब उनके ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज द पुअर पीपल दे कांट अफोर्ड टू गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दीज अदालत आर फॉर्म सो दैट छोटे मोटे जो केसेस हैं वो लोग फाइट कर सकते हैं. टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस टू पार्टीज थ्रू एमिकेबल सेटलमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दे हैव प्रूव टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव फॉरम फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. कोई भी डिस्प्यूट होगा उनको पैसे नहीं देने होते, तो ये जो है वो छोटे मोटे जो केसेस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं. इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is one of the most important characteristics of rule of law and is essential in order to uphold democracy. Due to a separation of powers, the Supreme Court acts as an independent body. Now, the rich and the influential are capable of influencing the judge from taking independent decisions. There are also people who try to influence the judicial process in an unfair manner. In order to avoid such situations, the Indian Constitution has made the judiciary an independent body. इनको कोई भी force नहीं कर सकता decision लेने के लिए. If you are giving them bribe, then also you will get the punishment. So these people, they will not take any bribe from you or anything. They should be very sincere to their job. On one aspect of this independence is the separation of powers, which means that other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. ये उनके बीच में नहीं बोल सकते. The Constitution has such provisions that ensure that the judiciary remains independent in matter of appointment, tenure, pay, etc. All judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from the other branches of the government. Once appointed, it is very difficult to remove a judge. एक बार अगर जज अपॉइंट हुआ तो उसको निकाल नहीं सकते आप, because they are independent body and they are selected by the president and you can't do anything to them. The Supreme Court of the India is called the guardian of the Constitution because it has the power to declare a law passed by the Parliament null and void or illegal if it is against the provisions of the Constitution. अगर Constitution उनको फॉलो नहीं करवाता तो सुप्रीम कोर्ट और का कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो पार्लियामेंट का कोई डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकता है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a vital role in protecting the fundamental rights of the citizen, because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. यहाँ पर देखो misuse नहीं होना चाहिए power का, that is why अगर कोई भी fundamental right का को protect नहीं कर रहा है, vital role उनका है, जो fundamental right को नहीं protect कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ जाके he can fight and they will get justice, because they have that, their duty is to give justice to the people over there. Next. Yes, now this is what the judiciary is about. So you have to please read the chapter carefully and understand the small points which are very important in this chapter. Thank you.